गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जीपीएस एंकलेट्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं टेरर अक्यूज जिनको बेल मिल जाती है उनको मॉनिटर करने के लिए। तो एक गुलाम मोहम्मद भट्ट हैं जिनको यूएपीए के अंदर अभी बेल मिली है। अ, उनको मॉनिटर करने के लिए जो है ये जीपीएस एंकलेट्स का यूज़ किया जा रहा है। तो स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जम्मू में जो है जीपीएस ट्रैकर एनक्लेट जो है वो लगाने की मंजूरी दे दी थी। और उसी के बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट इंडिया में पहला ऐसा डिपार्टमेंट बना है जो कि जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स का यूज़ कर रहा है। तो ये जीपीएस ट्रैकर जो है ये एक स्मॉल वेरेबल डिवाइस है जीपीएस कॉलर्स की तरह, और ये एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ वेयरर ऑल टाइम्स के लिए जो है हमें बताता रहता है कि कहाँ पर वो घूम रहा है पर्सन। ठीक है, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उसकी मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम में। और ये ईजी बना देता है यूएपीए के अंदर बेल देना। ठीक है, अदरवाइज तो ये खतरा रहता है कि यूएपीए अक्यूज कहीं भाग ना जाए। ठीक है, तो अगर हम जीपीएस ट्रैकर्स का जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो हम उनके ऊपर परमानेंटली मॉनिटर कर सकते हैं। ये डिवाइस एक टैम्पर प्रूफ है, मतलब इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, और अगर रिमूव करने की कोशिश की गई तो ये हार्म जो है ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और ये एक अलार्म भी है जो है वो एक तरह से बजा देगा, जिससे कि पता लग जाएगा कि इसको टैम्पर करने की कोशिश की जा रही है। और इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पहली बार इसका यूज़ कर रहे हैं। इवन हम इसको केरला में या फिर कूनो में हम एलिफेंट्स और चीता को भी मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। इवन आजकल ऑटोमोबाइल्स जो आती हैं, आपकी कार्स आती हैं, उनमें भी ट्रैकर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अभी तक कोई ऐसे स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस जो हैं हमने नहीं बनाए हैं, तो इसलिए जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स लगाना एक तरह से सही नहीं माना जा रहा है। और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने भी अभी तक कोई स्टैंडर्ड्स और एथिक्स नहीं बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के। और जो राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू ह्यूमन डिग्निटी को भी अपहोल्ड किया है। तो इसीलिए जो है ये एक वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है प्रिवेसी का, अगर आप इसको लगाते हो तो। ऑफकोर्स जो है राइट्स एक्टिविस्ट तो कुछ ना कुछ रीज़न देंगे, बट ये एक नोवेल सिस्टम बन गया है जिससे कि यूएपीए के अक्यूज को बेल देने के प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जीपीएस एंकलेट जो है उसको कोर्ट ने ही सैंक्शन किया है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही इसको यूज़ कर रहा है, बहुत सी सारी कंट्रीज़ में, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, मलेशिया हो, कोई भी ऐसी कंट्री हो, हर जगह पर ये इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उत्तराखंड टनल कोलैप्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 40 वर्कर्स जो हैं वो एक टनल में ट्रैप हो गए हैं क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन टनल स्ट्रक्चर जो है वो उत्तराखंड में कोलैप्स हो गया है। ठीक है, तो ये 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के अंदर एक टनल बनाई जा रही है रादर, जो कि सिलक्यारा को डांडल गांव के साथ कनेक्ट करेगी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। 4.5 किलोमीटर की टनल है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल्स है ये 4 धाम परियोजना की। और जो सिलक्यारा टनल है उसमें जो ये वर्कर्स ट्रैप हो गए हैं, तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस जो है वो इसमें अपना रोल निभा रही है। लेबरर्स कहा जा रहा है कि सेफ़ हैं, उनको फूड और वाटर भी जो है सप्लाई दी जा रही है कंप्रेशन पाइप के थ्रू। ओके, तो 4 धाम परियोजना क्या है? तो ये 4 धाम बेसिकली जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इनको कनेक्ट करने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। 880 और 890 किलोमीटर के आसपास के ऑल वेदर रोड्स इसमें बनाई जा रही हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो जो है इसमें गंगोत्री जो कि गॉडेस गंगा को डेडिकेटेड है, यमुनोत्री जो गॉडेस यमुना को डेडिकेटेड है, केदारनाथ जो शिव को डेडिकेटेड है, और बद्रीनाथ जो विष्णु जी को डेडिकेटेड है। तो उनको जो है कनेक्ट किया जा रहा है इस 4 धाम परियोजना के थ्रू। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाधवान पोर्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जो है 76,000 करोड़ का पोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया है, और उसके लिए पब्लिक हेयरिंग्स शुरू कर दी गई हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये वाधवान में महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, कंटेनर पोर्ट प्रोजेक्ट। ये एक जॉइंट वेंचर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के बीच में। तो इस पोर्ट में अगर हम कहें तो 20 मीटर्स का नेचुरल ड्राफ्ट है। ठीक है, जिससे कि बिगर वेसल्स को हैंडल किया जा सकेगा, और ये 254 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो को हैंडल कर सकेगा। इसको ग्रीन पोर्ट की तरह डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मद्देनज़र रखते ही इसकी कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन किया जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में अगर हम देखें तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ये इंडिया का। 55% ऑफ टोटल कंटेनर्स यहाँ पर हैंडल किए जाते हैं मेजर पोर्ट्स में। बाय ऑल मेजर पोर्ट्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो 55% है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में ही जो है वो हैंडल किए जाते हैं। ईस्ट ऑफ मुंबई में लोकेटेड है, नवी मुंबई में, महाराष्ट्र में, और ये अरेबियन सी पर है ये पोर्ट, ठीक है। और इसको ये एक कोर्स ये एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है, टर्मिनल है वहाँ का रादर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नाइपर रिवर। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशिया की मिलिट्री ने रिसेंटली कहा है कि उन्होंने यूक्रेन का एक अटैक जो ईस्टर्न बैंक ऑफ नाइपर रिवर पर किया जाने वाला था उसको उन्होंने थ्वाट कर दिया है। तो नाइपर रिवर 4th लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, और ये ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। मच ऑफ बेलारूस और यूक्रेन में इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ ये ड्रेन होती है, ओरिजिनेट होती है रशिया से, फिर ये रशिया, बेलारूस और यूक्रेन से जो है ये निकलती है, ठीक है। और जो है अगर हम इस देखें तो इसकी 32,000 के आसपास इसकी टोटल ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके। मेजर यहाँ पर अर्बन सेंटर्स जैसे कि रशियन सिटीज़ ऑफ स्मोल्स्क, डोरोगोबुस और मोगिलेव ऑफ बेलारस, फिर कीव, ये सारी जो सिटीज़ हैं मेजर सिटीज़ वो नाइपर रिवर पर ही सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसराइल ने रिसेंटली कंफर्म किया है कि उन्होंने अपने सोफिस्टिकेटेड एरो 3 मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम का यूज़ करते हुए ईरान बैक्ड हुथी रिबेल्स के जो है मिसाइल्स को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो जो एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये एक एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लॉन्ग रेंज थ्रेट को जो है वो डील करने के लिए। इसको इसराइल और यूएस ने दोनों ने मिलकर बनाया है। तो ये टॉप लेयर है इसराइल के सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क की। 2017 में इसको डिप्लॉय किया गया था। तो ये एक्सो एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या हुआ कि जब बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर आपकी कंट्री के ऊपर आ रहे हो तो उसको आप एटमॉस्फेयर के आउटसाइड ही आप उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, ताकि एटमॉस्फेयर में उनको आने का मौका ही ना मिले, ओके। तो अगर हम देखें तो ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंटरसेप्टर्स इसमें मिसाइल्स लगे हैं, और 2400 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और ये ऑल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर पर ही जो है इंटरसेप्ट कर लेता है टारगेट्स को। अर्ली वार्निंग और फायर कंट्रोल रडार इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी। हिट टू किल टेक्नोलॉजी लगी है इसमें, जिससे कि मिसाइल्स जो इनकमिंग मिसाइल्स है उसको ये टारगेट कर सकता है, और इसको वर्टिकली लॉन्च किया जाता है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिरसा मुंडा। तो ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो है वो आज के दिन जो है झारखंड में जाएंगे। बिरसा मुंडा जो है उनकी एनिवर्सरी को, बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, ओके। तो और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी जो है वो लॉन्च की जाएंगी। तो बिरसा मुंडा जी जो है वो फोक हीरो थे, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे जो मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते थे। इंडियन ट्राइबल मास मूवमेंट उन्होंने स्पेयर हेड की थी जो बिहार और झारखंड से शुरू हुई 19th सेंचुरी के अर्ली 19th सेंचुरी में, अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। जब ज़मींदारी सिस्टम आया तो बिरसा मुंडा जी ने 1894 में उलगुलन रिवोल्ट जो है वो शुरू किया, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश और दिकूस, जिनको आउटसाइडर्स कहा जाता था। इनको हम धरती अब्बा भी कहा जाता था उस समय पर। और इनके ही स्ट्रगल की वजह से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है वो 1908 में पास किया गया, और स्टेट ऑफ झारखंड को भी इनकी बर्थ एनिवर्सरी में ही मतलब 15 नवंबर 2000 में ही इसलिए झारखंड को बनाया गया था। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिपोर्ट सबमिट की गई है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम 2.0 द्वारा, जिसमें कहा गया कि ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन जो है वो 60% इंक्रीज हुई है। तो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम 2010 में लॉन्च किया गया था ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव द्वारा, वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है रादर ये। और इसमें कहा गया था कि जो रैपिड डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड टाइगर्स हैं उनको रिवर्स किया जाए, और टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको 2022 तक डबल किया जाए। तो जो फर्स्ट ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है उसने वाइल्ड टाइगर कंजर्वेशन में बहुत हेल्प किया है। और इस जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जो 2010 में 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ ने बनाई थी, उसमें इसको एंडोर्समेंट भी मिली थी, ओके। तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ में ऑफकोर्स इंडिया भी आता है, रशिया भी आता है, चाइना भी आता है, ओके। तो अब ये ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम 2.0 क्या है, तो 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो डबल करने के बाद अब एक नया ऑब्जेक्टिव भी चाहिए था। तो इसके लिए ही जो है ये टाइगर रेंज कंट्रीज़ जो हैं 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़, इन्होंने एक इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें कि ग्लोबल टाइगर फोरम जो है WWF वर्ल्ड वाइड फंड
के साथ मिलकर टाइगर गवर्नेंस और उससे रिलेटेड रिसोर्सेज और प्रोटेक्शन को और एनहेंस करेंगे, ताकि टाइगर कंजर्वेशन 2023 से लेकर 34 के बीच में अब उस आगे कैसे की जाएगी, ये उसका एक रोड मैप दे. ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is GPS anklets. This topic is important for your security section. So Jammu Kashmir police has become the first in the country to use GPS tracker anklets for monitoring the terror accused who has gotten bail under UAPA Act. Ghulam Muhammad Bhatt has gotten this bail, and now National Investigation Agency court has ordered that the police can fix GPS tracker anklet on his foot to monitor his movement. Okay, so with this, J&K Police Department has become the first in India to be using this GPS tracker anklets. So basically, it's this GPS tracker anklet is a small wearable device like your GPS collars, and this provides us with the exact location of the wearer at all times, and it also allows the enforcement agencies and security agencies to monitor the movement in real time. Okay, so the use of GPS tracker makes it a little easier to get bail under the stringent UAPA. Okay, so because this is very safe, it is tamper proof, and it sets off an alarm in case it is tampered by someone. It cannot be removed by the wearer or any unauthorized person without damaging it. So this tracker can be put on the ankle or arm of the person. So that's why these GPS anklets or GPS bracelets have become very useful. So we are not only using it to track criminals, but these type of devices have been used to track the movement of wild animals also, like the rogue elephants in Kerala, or even the newly introduced cheetahs in Kuno National Park. Even your new cars or automobiles are equipped with such trackers, so that you can trace it in case they get stolen. Okay, but of course it is not without criticism. The activists have said that because of absence of any specific legal provisions, use of GPS tracker anklets become troublesome, and also the security establishment is yet to establish any standards or ethics in electronic monitoring of people through these anklets. Supreme Court has also said in Menaka Gandhi versus Union of India case that the right to life also includes the right to live with human dignity. So that's why the rights activists are saying that tracking a human being is violating the fundamental right of that or right to privacy of that individual. There are also concerns over over regulation and infringement of human rights also. Okay, but is it the only but is it India? But is it India that is making this this tracking, or is it only India that is tracking the criminals or the accused through such GPS anklets? No, of course. The use of GPS anklet has already been sanctioned by a court, and there are many other countries including US, UK, Malaysia that also use these GPS trackers as a precondition of bail. Okay, so the next topic is Uttarakhand tunnel collapse. This topic is important for your governance and your and your environment section. So about 40 workers are trapped inside a tunnel, and after the under construction tunnel structure has collapsed in Uttarakhand recently, and this tunnel is part of the Char Dham Pariyojana. So this tunnel is meant to connect Silkyara to Dandal Gaon in Uttarkashi district, and this is about 4.5 kilometer long tunnel. This double lane tunnel is one of the longest tunnels under the Char Dham Pariyojana project, and these workers are trapped inside the Silkyara tunnel, okay, which is located on the Uttarkashi Yamunotri road. So the rescue operations have already started. The NDRF, the SDRF, and the police are working in a multi-agency rescue operation. And as per the officials, laborers are safe and they are being provided food, water, and oxygen through a compression pipe. Okay, so what is Char Dham Pariyojana? As the name suggests, Char Dham of Uttarakhand, Yamunotri, Gangotri, Badrinath, and Kedarnath, they are being connected through double lane roads, and they are about 880 or 890 kilometer all-weather roads, and these highways are being developed in Uttarakhand to improve access to these Char Dham. So these Char Dham are Gangotri, which is dedicated to goddess Ganga; Yamunotri, which is dedicated to goddess Yamuna; Kedarnath is dedicated to Lord Shiva; and Badrinath is dedicated to Lord Vishnu. Okay.
So the next topic is Vadhavan Port. This topic is important for your economy section. So Vadhavan Port Project Limited has initiated the process for construction of 76,000 crore port, and public hearings are likely to begin in the next few months. So this Vadhavan Port is a proposed container port project at Vadhavan in Maharashtra. It's a joint venture between Jawaharlal Nehru Port Authority and the Maharashtra Maritime Board. And this new port has a natural draft of about 20 meters close to the shore, which makes it possible to handle bigger vessels also. So this will be designed to handle about 254 million tons of cargo, and it will be developed as a green port. Okay, so it will also provide green fuel to ships. And the construction and operations are also being planned by keeping the environmental issues in mind. Okay, so what is Jawaharlal Nehru Port? It is also known as the largest container port in India, and it handles about 55% of total containers handled by all major ports in India. It is located in east of Mumbai, in Navi Mumbai, Maharashtra, and it is on the Arabian Sea, and it is also the terminal of Western Dedicated Freight Corridor. So the next topic is Dnieper River. This topic is important for your international relations. So Russia's military has recently said that its forces have thwarted a Ukrainian attempt to forge a bridgehead on the eastern bank of Dnieper River. So Dnieper River is the fourth longest river in Europe after Volga, Danube and Ural, and it is located in Eastern Europe, and it drains much of its water the Belarus and Ukraine, and it originates from Russia, and it traverses through Russia, Belarus and Ukraine. Major cities of Russia like Smolensk, Dorogobuz and Mogilev in Belarus, and major cities of Ukraine like Kiev, Cherkasy, Dnipro and Zaporizhzhia all are located on the banks of Dnieper River. So it has as many as 32,000 tributaries which drain the waters into the Black Sea. Okay, so the next topic is Arrow 3 missile defense system. This topic is important for your security section. So Israel has recently confirmed that it has used its sophisticated Arrow 3 missile interceptor against Iran-backed Houthi rebels. So what is Arrow 3 missile defense system? It's an exo-atmospheric anti-ballistic missile defense system which is meant for long-range threat engagement. This was jointly developed by Israel Aerospace Industries and the Missile Defense Agency in the US, and it was deployed initially in 2017. So Arrow 3 is the top layer of Israel's sophisticated air defense network. It is designed to take out ballistic missiles while they are still outside of the atmosphere. This is the meaning of exo-atmospheric defense system. Okay, so it uses two-stage solid fuel interceptors. It also provides a range of about 2,400 kilometers. And what exo-atmospheric means, that it can intercept threats at an altitude of more than 100 kilometers. Okay, it also has an early warning system and fire control radar, and it also has multi-target acquisition and tracking capabilities. So it uses hit-to-kill technology so as to destroy the incoming missiles, and the missiles are launched vertically to the direction, and it can also be changed towards interception point. So the next topic is Birsa Munda. This topic is important for your art and culture section. So PM Modi has recently announced that he will be going to the native village of tribal icon Birsa Munda on his birth anniversary and launch a welfare scheme for the community. So this will be done today, as today is Janjatiya Gaurav Divas. Okay, so who was Birsa Munda? So he was a folk hero and a tribal freedom fighter who hailed from Munda tribe, and he spearheaded the Indian tribal mass movement which arose in the state of Bihar and Jharkhand belts in the early 19th century under British colonial rule. So he led this tribal movement as a reaction to the introduction of zamindari system or permanent settlement in tribal areas. So Birsa Munda declared Ulgulan, that is the revolt against the British and Dikus. Dikus were the outsiders, and he was given the name of Dharti Abba by his supporters. And because of his struggle, the Chota Nagpur Tenancy Act was passed in 1908. In recognition of his impact to the national movement, the state of Jharkhand was created on his birth anniversary, that is on 15th November 2000. Okay, on 15th November, that is today, on the birth anniversary of Birsa Munda, the central government declared in 2021 that it would be celebrated every year as the Janjatiya Gaurav Divas. Okay.
So the next topic is Global Tiger Recovery Program. This topic is important for your environment section. So as per the report submitted under the Global Tiger Recovery Program 2.0, overall tiger population has increased 60%. Okay, so what is this Global Tiger Recovery Program? It was launched in 2010 under the Global Tiger Initiative of the World Bank to save wild tigers. So this initiative has set up the ambitious target of reversing the rapid decline of wild tigers across the tiger range and doubling their population numbers by 2022. Okay, so the first Global Tiger Recovery Program helped to pull focus to wild tiger conservation and secure a collective commitment from tiger range countries. So this Global Tiger Recovery Program was also endorsed by the St. Petersburg Declaration in 2010, which saw 13 tiger range countries who committed to reverse the decline of tiger population. So these 13 tiger range countries are Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Russia, Thailand, and Vietnam. Then what is this Global Tiger Recovery Program 2.0? So after reaching the objective of doubling tiger population of 2020 and by 2022, we have these tiger range countries rather have firmed up their efforts through an intergovernmental platform of the Global Tiger Forum along with collaborators like the WWF, and the aim is to give a roadmap for the tiger conservation from the year 2023 to 2034 and strengthen tiger governance, enhancing resources and protection for the same. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.